सर आपको बताना चाहूँगा, पेरिस में एक बहुत ही मशहूर कैथेड्रल है जिसका नाम है नोस्ट्रे डामे कैथेड्रल। जी। उसमें एक समय में आग लग गई थी जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा था। जी। अब हाल ही में उसको फिर से ओपन कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। कैथेड्रल का मुझे तो मैं समझता हूँ, कैथेड्रल कहते हैं चर्च को। हाँ। और जहाँ पर इबादत होती हो, खुदा को याद करा जाता हो या हमारे को याद हो, ऐसी जगह पे अगर आग लगती तो सब ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। धर्म कोई सा भी हो, लेकिन ऐसी जगह पे आग लगना अच्छी बात नहीं। और चलो ये बहुत खुशी हाँ, की बात है कि हाँ, वापस दोबारा वो खुल गया। हाँ, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी और इसको देखना चाहेंगे। हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर इबादत के काम में अगर आग लगती है तो ये मान कर चलो कहीं ना कहीं मालिक अपने तो खपा है, किसी तरह अपने को मालिक को मनाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे मालिक कभी अपने को बोले नहीं और अपने लिए बने। अब वो क्या है देखते हैं। Notre Dame Cathedral, a timeless masterpiece of Gothic architecture, has stood as a symbol of Paris and French heritage for centuries. Its intricate stonework, soaring spires, and stained glass windows have captivated millions of visitors for centuries. It's now been more than 5 years since a fire ripped through the cathedral. The loss was immense, both culturally and symbolically. Notre Dame was more than just a building. It was a living testament to centuries of history, art, and faith. While the world watched in horror as its most famous church was consumed in flames, it was promised by French President Emmanuel Macron that it would be restored within 5 years. The goal was not merely to rebuild the cathedral, but to restore it to its former glory, preserving its historical integrity while incorporating modern techniques to ensure its longevity. But after more than 5 years of painstaking and often controversial restoration work, will Notre Dame finally open in 2024? Stay with us to find out. This is Megalith. Please subscribe to our channel for more amazing mega projects. The 2019 fire in Paris Notre Dame Cathedral resulted in the devastating loss of several irreplaceable features. Chief among these was the cathedral's iconic spire, the 19th century addition designed by Eugene Viollet-le-Duc. This soaring structure, with its intricate ironwork and lead cladding, was a beloved landmark of Paris. The fire also consumed the cathedral's magnificent timber roof frame, a masterpiece of medieval carpentry. This vast network of beams and rafters, known as the forest, had stood for centuries, supporting the cathedral's stone vaulting. The loss of this historic structure was a significant blow to the cathedral's architectural heritage. In addition to the spire and roof frame, the fire damaged numerous other elements of the cathedral's interior. Stained glass windows, some dating back to the 13th century, were shattered or melted. Statues and other decorative elements were also affected by the heat and smoke. The clock of the cathedral, a 19th century priceless timepiece, was also unfortunately destroyed in the 2019 fire. The clock, located near the cathedral spire, collapsed along with the roof and spire during the blaze. Clockmakers who lamented the loss of such great mechanical movement that drove the hands of Notre Dame Cathedral's 4 clock faces celebrated the miracle discovery of a near-identical mechanism 2 miles away, proving essential in the reconstruction of the clock with the assistance of Russian clockmakers of the Raketa factory. While many of these artifacts have been salvaged and are being restored, some were irreparably damaged. The reconstruction process has been a detailed and painstaking endeavor involving a team of skilled artisans, architects, and engineers. Every aspect of the cathedral, from its intricate stone carvings to its stained glass windows, is being meticulously restored or replaced. The use of traditional techniques, combined with modern technology, has allowed for a delicate balance between preservation and innovation. But how much will the final bill be to restore the Paris Notre Dame Cathedral? Immediately after the fire, around $1 billion in donations poured in from individual contributors, as well as companies like Apple and Disney. The wealthy French families behind LVMH and Kering pledged $226 million and $113 million, respectively. LVMH owns several major French fashion houses, including Louis Vuitton and Christian Dior. Kering owns other luxury brands such as Saint Laurent and Gucci. As of the time of making this video, the budget for Notre Dame's restoration is approximately $800 million. Thus far, approximately $600 million has been spent. The new liturgical furniture is designed in bronze by the foundry at Barthélemy Art in the Drôme. The sacred vases were designed in gold by Marichal silversmiths. And the new chairs, 1,500 in all, are made of solid oak from Solonia.
The crown of thorns, तुम the बहुत बढ़िया essential sacred relic for काम कर रहे हो believers, भाई, is भगवान installed at the तुमको heart of a आदर new देगा। 14-meter-high reliquary, designed in cedar wood. Even the Olympic bell rung by the athletes after each victory at the Stade de अच्छा France ये during भी the Paris 2024 Olympic Games has now joined one of the cathedral's towers. ओहो But when will the restoration work come to an end, and when will the cathedral reopen to the public? बहुत बढ़िया Over 5 years after the devastating fire threatened to destroy Paris's most famous सही है landmark, Notre Dame is scheduled to reopen to the public on December 8, 2024. बहुत बढ़िया 24 में चालू हुआ In है preparation for the grand reopening, France's culture हो minister, चुका Rashida Dati, has अबे हाल ही proposed में हुआ introducing यार a controversial €5 entrance fee to contribute to a fund aimed at protecting the country's वाह historical churches and ये monuments. ये The suggestion comes in the context of Oh, many oh, European oh, countries oh, already better charging yeah. fees for entry to their famous cathedrals and significant landmarks. जी Despite the financial rationale behind the proposal, the idea has met with strong opposition from France's Catholic Church. Many members of the अच्छा clergy अच्छा argue that such a fee conflicts with the principles of accessibility and inclusivity that should govern places of worship. सही है Additionally, a 1905 French law on secularism prohibits the imposition of taxes on church visits. Before the fire, Notre जी Dame did charge visitors for access to specific areas, but generally, ओहो entry was free. क्या Alternative बात suggestions are being explored, including voluntary ये सब फ्री contributions होने and से donations पहले from तो visitors. Some officials, like होना Paris's चाहिए mayor, Ariel Whale, believe that while the proposed fee may not be feasible, the idea highlights the financial challenges associated with जी maintaining such an iconic site. As of October 2024, reconstruction works at Notre Dame Cathedral have made significant progress since the devastating fire that occurred in April 2019. जी The restoration effort is focused on rebuilding the iconic spire, repairing the roof, and restoring the interior to its historic condition, तो allowing the मेहनत लगी building है to stay on मेहनत तो track for लगेगा its भैया scheduled 2024 reopening. सही मेहनत तो है लगेगी But the दिमाग भी cathedral लगेगा won't be जिंदगी 100% restored until 2026. The apse and sacristy will be finished sometime in अच्छा 2025, and 2026 will see the installation of new stained glass windows. ओहो आहा भविष्य आहा The निर्माण existing windows, क्या which बात date to the है 19th century, will be moved to a museum, and the new windows will be designed by a contemporary French artist. सही है More than 100 artists submitted their designs, and as of this video, there are 8 finalists, among them Daniel Buren, known for his black and white striped columns in the inner क्या courtyard बात of है the Palais Royal. The restoration of the जबरदस्त forecourt and the approach to the cathedral, its जी vegetation, and the enhancement of the facade, under the direction of Belgian architect and landscape designer Bas Smets, will be completed in 2027. 27 तक करेंगे But 2024 is a year to celebrate the grand reopening of the Paris Notre Dame Cathedral. The official inauguration is scheduled for 7 December 2024, with the awakening of the organ, a liturgical celebration including a blessing, Magnificat or a Te Deum, and Vespers. अच्छा The first 17 public दिसंबर mass is scheduled for 8th of December 2024, जी with the consecration of the altar. Finally, from the 8th to the 15th of December, an octave promises a solemn celebration every day. Numerous cultural events will also accompany the reopening, under the banner Notre Dame de Paris towards the reopening. The more than 5 years of painstaking restoration have finally जी culminated in a triumph of human spirit and artistic 5 endeavor. साल लगे भी The इसको cathedral's 5 rebirth is a साल testament to the enduring power of culture, faith, and the unwavering commitment of the people of France to preserving their shared heritage. As we इनकी reflect upon सराहना this करते हैं भैया magnificent हम structure अपने again, बहुत अच्छे ढंग we're से reminded of काम the किया है past, inspired by the present, and hopeful for the future. क्या बात We hope you enjoyed our video. This is Megalith Mega Projects. Please don't forget to click मैंने subscribe and turn on को notifications बढ़िया चाहिए for more मेरा तो ये documentaries on the most बात है amazing mega काफी मेहनत projects करी और हाल ही worldwide. में घटना घटी है अभी हाँ यार इंसान जो है वो नश्वर है इंसान तो आज है कल नहीं कभी भी मर जाएगा लेकिन ये जो हम धरोहर है जो इससे जो एक इतिहास रची बने इनको तो कदम इंसान को बचा कर रखना चाहिए वो सर अभी बताया कि 8 दिसंबर को उसको दोबारा चालू कर दिया पब्लिक के लिए हाँ तो एकदम ताजी घटना घटी हाँ और शुरू हो गया बड़ा अभी हाल ही में हम उसके आसपास से हमारा वक्त तो गुजर रहा है 2-4 दिन ही गुजर रहा है हाँ मतलब देखो कि सर कितनी शानदार चीज थी किसी घटना से वो चीज क्षतिग्रस्त हो गई हाँ लेकिन बाबू देखो कि बड़े बड़े कंपनी वाला और हजारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए दिए तब जाके चीज अरे बनी है मेरे भाई यहाँ बात कंपनी की नहीं है यहाँ बात में एक आत्मविश्वास की दिल में ईमान धर्म की हर आदमी को ये कोशिश करेगा कि इतने लोग प्रार्थना करने के लिए आएंगे इतने लोग हाँ भक्ति करने के लिए आएंगे कोई ना कोई तो ऐसा सबसे होगा जो हमारे लिए दुख होगा उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैसा नहीं दिया उन्होंने
दे दिया। बाबू तुम्हारी बात से मुझे एक बात भी याद आई, तुमने हाँ। भी बोला वीडियो के हाँ। माध्यम से कि ये जो धार्मिक चीजें होती हैं अक्सर हाँ। ये दान पुण्य से बनती है, दान पुण्य और ये चीज भी मतलब सरकार ने खुद ने पैसा नहीं लगाया, वहाँ के लोगों ने पैसा लगाया, फ्रांस वालों ने, और उस चीज को निर्माण करा। हाँ। और मैं एक चीज के देख के ये सोचा कि यार देखो चीजें सृष्टिगत होने में समय लगता है, हाँ। समय नहीं लगता है, हाँ। लेकिन बनाने में समय लग जाता है। समय लग गया। 5 साल लगे फिर वो चीज बनती है, तो मैं उस चीज को बड़ा उत्साह से देखने लगा कि यार वाकई पैसा तो लगा, हाँ। लेकिन वो चीज ऐसी बनाती है कि वो हजारों लोग आएंगे दूसरे देशों के भी, हाँ। अपनी प्रार्थना करके जाएंगे, और वो चीज कायम रहेगी, आने वाले पीढ़ी याद रखेगी उसे। फिर वाले हाँ। ये रखेगी और ये सिलसिला चलते रहेगा। हाँ। आप 5 साल को मत देखो, सैकड़ों साल पुरानी जो चीज है हाँ। उस चीज को दोबारा जिंदा को करना, यानी एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हिम्मत नहीं दिया रही, और उसके लिए लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया। आज वो चीज वापस बन के खड़ी हो गई। सही बात। और ये चीज जब तक दुनिया इंसान आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन ये चीज क्या है वो आने वाली पीढ़ी वो उस चीज को याद करेगी। बस सही बात है, अगर कुछ चीज उसको सृष्टि से बचा सकती है, हाँ। तो वो कुछ घटना होगी या प्राकृतिक घटना, हाँ। हाँ। बाकी उसकी हिफाजत करना तो इंसानों के हाथ में, और मैं चाहता हूँ कि वो आके लोग करें और कर भी रहे हैं। कर भी रहा बड़ा है। सुन के अच्छा भी लगा, और इससे हमें बहुत उत्साह मिली। यार मेरे को एक बार समझ नहीं आई, 2019 में लॉकडाउन लगा हुआ था, और जो लोग गए नहीं, फिर आग लगी करते, ये बात समझ गया शायद पहले वो, यार। अब अक्सर हम सुनते हैं वो तारों में चिंगारी निकल जाती है, तो उसके माध्यम से भी कभी भी आग लग जाती है। यार वो ये शायद बात- लकड़ी का है अंदर, अच्छा लकड़ी का भी काम करा हुआ आपने, हाँ। गौर करा उसके हाँ, अंदर, लकड़ी का भी- बाहर से तो पत्थरों का, हाँ। अंदर से भी चीजों को तराशा गया बाबू, हाँ। ना जाने क्या क्या चीजें उसको तराश तराश के लगई, लगा। तो वो बड़ी खूबसूरत लगी, और बहुत खर्चा करा, वाकई मतलब इंसान को सुकून मिले। सुकून मिलता है। सब ये वीडियो तो हो गई खत्म, बाकी वीडियो को देख हमको बहुत अच्छा लगा, और कोई हमको दुख भी हुआ है कि इतनी पुरानी चीज चली गई, लेकिन वापस खुशी ये हुई कि उन्होंने दोबारा मेहनत करी, और बिल्कुल धार्मिक प्रवक्ता के हिसाब से ये जो चीज बनी देख के बहुत अच्छा लगा। अगली वीडियो इसी तरह कोई वीडियो लेंगे, अगली बार फिर शायद देंगे। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।